ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा वेबिनार है वो रिलेटेड टू टिश्यू कल्चर वेबिनार है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ उरूज फैसल, फाउंडर ऑफ PNR। और जो हमारा आज हमने ये ऑर्गेनाइज किया है टिश्यू कल्चर का वेबिनार। और जो हमारे स्पीकर हैं उनका नाम है मोहम्मद जैनुल आबिदीन, एमफिल इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम निपजी, and his research expertise in cell and tissue culture of sugarcane, date, palm, and maize. So, is a short introduction of him. So, it's all up to you, Sir Zainul Abidin. आप start कर सकते हैं webinar को. सर आप मीटिंग में? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. हबीबा काइंडली चेक करें सर का माइक ऑन है. मेरी सेटिंग्स में सारे रिएक्शन माइक और वीडियो सब अलाउड है. ओके ठीक है. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर Okay, so can you please share the screen? सर इट्स ऑलरेडी हियर. Okay, let me check. It's not visible to me. Sir, it may be due to your low network connection. Maybe kindly check your network and you may refresh it. Okay, now it's visible. So Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the cell and tissue culture technology, which is a tool of agriculture biotechnology. I'm the host today, Muhammad Zainul Abidin, MPhil in biotechnology from NIPG, which is a sub-campus of Piaz. Okay, so स्लाइड को काइंडली ना आप आगे कर दिया करें उरुज. Okay, so this lecture includes the overview of cell and tissue culture, the benefits of cell and tissue culture technology, the stages of plant growth, and the importance of tissue culture in food security and plant health. Next, करें. Next slide, please.
It's not moving. सर मैंने नेक्स्ट स्लाइड कर दी है इंट्रोडक्शन की. Okay, I think I have a internet disconnection. Okay, so tissue culture is the in vitro cultivation of cells, tissues, and organs under sterile conditions, and it is based on the principle of totipotency, which is the ability of a single cell to regenerate into a whole organism, and it is widely used in plant biotechnology, health biotechnology, and research. You can grow any desired plants into multiple varieties, and it has the following types, including the callus culture, meristem culture, protoplast culture, haploid culture, and micropropagations. There are many other types as well, but I have included only these. And there are various benefits of this technology, like you can uh, grow the desired variety into thousands of plants, and there is no need to wait for any season. You can provide the artificial growth environment, the temperature. You can increase in the growth room, or you can allow the heating system, so there is no need to wait for any season. And the other benefit include the uniform and true to type plants. The plants that you produce using this technology are purely of the same genotype, and they are genetically identical to each other except in the case of somaclonal variations. And the other benefit include germplasm conservation. It means that if there is any plant that is at the risk of extinction, then using this technology you can protect that plant or variety from extinction. And other benefit include production of secondary metabolites. You can uh, produce desired secondary metabolites or any kind of fragrance that is coming out from the plant, and it could be extracted using the fractional distillation process, and you can even uh, use it for industrial production. And the last benefit include faster breeding cycles. It means that you can regenerate the desired plants uh, within a limited time. Okay, so the stages of plant growth. So we start from the selection of X plant, which is basically the mother plant, and it should be phenotypically healthy and disease free. Second stage include the initiation, in which you do the surface sterilization and establishment of the explant on the callus media. Then you can multiply that callus on the growth media. That could be solid growth media or liquid growth media. And the basic ingredient in both of these is the MS salt, muricide school salt. Next, once these plants get multiplied, then you can go to the rooting stage, in which you provide them the growth hormones like naphthalene acetic acid or indole acetic acid. And the final stage includes hardening and acclimatization, in which you shift these plants into the greenhouse. Next. And tissue culture has a wide importance in food security and national action plans, including the development of stress tolerant crops and the conservation of endangered plant species, and the virus free and disease free seed production, and the climate resilient crop development. And tissue culture technology supports the sustainable agriculture
and it enhances the productivity in limited land. Thank you. Thank you so much. If there are any queries, you can ask. Actually, I was a bit busy, so I just gave a brief overview about this technology due to limited time. So, my apology for that. ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, आप में से किसी को कोई सवाल है तो आप सर से पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई आपको पॉइंट नहीं समझ आया या फिर कोई आपकी क्यूरी है, आपने इससे रिलेटेड कोई काम किया हुआ है, देन आस्क। ओके सर, जैनुल आबिदीन, एक हमारा क्वेश्चन है, आया है, कैन वी ग्रो ऑल प्लांट्स विद दिस टेक्निक? सर कैन यू हेयर मी? मैसेज में एक क्वेश्चन आया है, कैन वी ग्रो ऑल प्लांट्स विद दिस टेक्निक? सर काइंडली आप जवाब ना माइक पे दीजिएगा और इसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। Okay, can you please repeat the question? इसका इनका सवाल है, कैन वी ग्रो ऑल प्लांट्स विद दिस टेक्निक? Yeah, once the media is optimized, once you are able to optimize the regeneration media, आपकी वॉइस नहीं आ रही, and अब you इसको have काइंडली developed रिपीट कर a दें। recipe for the regeneration. आपकी वॉइस नहीं आ रही, स्टार्ट से रिपीट कीजिएगा। Yes, once the growth media and regeneration media is optimized, then any plant can be grown using this technology. But it takes time to optimize the growth conditions and the lab environment and the temperature and the pH and everything. So it takes a time to optimize everything. ओके, एक स्टूडेंट का सवाल है, आप काइंडली जो इनकी टाइप्स हैं उनको एलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर दें। Okay, so careless culture. First of all, there is a flag leaf. These are the young leaf at the stage of on the top of the plant there are meristems, and above the meristem there are a lot of the place where you can uh, cut the callus and put it into the callus media. So once you can do the callus culture, you are also able to do the meristem culture, because both of these regions are closer to each other. And about the protoplast, you remove the cell wall, and you apply the buffers that disrupt the cell wall, and the nucleus and cytoplasm, they are grown in the culture. And about the haploid culture, it include like anther culture or pollen culture. And if you go for micropropagation, it is also like growing the cells in vitro. So these are the uh, closely related uh, terminologies.
you have to study them in details. Okay. Next question is, what is the difference between direct and indirect organogenesis? Organogenesis, basically it is the somatic embryogenesis, and it produce the somaclonal variations. And if you are doing it on the same type of callus, then it is a direct organogenesis. And if you are doing it सर आपकी वॉइस कट रही है, आप काइंडली इसको रिपीट कीजिएगा दोबारा. if you use direct, idea. Okay. Yes, there is another question. With tissue culture, there is still chromosomal variation. First, yeah. Second, is that why there is still a little chance of immune Sorry, I'm rejection when we unable use to cell of a person's own body? listen the question. मैं दोबारा बोल देती हूँ. आप सर चैट बॉक्स भी ओपन कर दीजिए अपने साथ ही. With tissue culture, there is still chromosomal variation. Is that why there is still a little chance of immune rejection when we use the cells of person's own body? Yeah, tissue culture is basically the in vitro regeneration. So there are some chemicals like colchicine. Colchicine, if you use it in the tissue culture, it allows the duplication of the chromosomes. It means that if there are 14 chromosomes in the plant, and if you apply the colchicine, then they will get double, and the results will be different. So there are uh, some consequences of these chemicals. Okay. Next here is that there is still a little chance of immune rejection when we use a cells of person's own body. It is, I think, going to the human side. So we are basically talking about the plant cell and tissue culture. So I think uh, it is not related to the topic. ओके सर, ये मेरा अपना क्वेश्चन है क्योंकि मैंने फंगल बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ा है और टिश्यू कल्चर भी पढ़ा है. तो मुझे ये बताएं कि स्पोर्स को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है स्पेशली. तो टिश्यू कल्चर में जब ये हमारे पास इशू आ जाता है फंगल का, तो इसको हम कैसे डील करते हैं? Yes, it is a very nice question. The major issue in tissue culture is of the contamination. There is a 99% risk of contamination in tissue culture. So you have to follow the aseptic techniques, and you have to maintain a sterile environment in the inoculation room, in the growth room, and when you bring the explants, you have to put it inside the sodium hypochlorite solution, and you have to wash those explants with 70% ethanol, and you have to follow all these safety procedures to minimize the risk of any fungal or microbial contamination. ओके सर. आपने जैसे बताया था कि स्टार्ट में कि कुछ हमारे पास जो होते हैं फाइटो हार्मोन्स होते हैं, सच एज साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन या फिर ऑक्सिन, उनका थोड़ा सा वन लाइन में रोल बता दीजिए. Okay, so you are well aware of the PGRs, plant growth regulators, like auxins. It includes indole acetic acid or naphthalene acetic acid, or these may be cytokinins, or maybe gibberellic acid, or other like jasmonic acid. So these are basically, these allow the callus induction, or these allows the plant to multiply. They allow the shoots to divide, and they allow organogenesis. So these plants uh, gets multiplied
at a very faster rate if you increase the concentration of these growth hormones, but they should be optimized, otherwise the plant ओके gets सर। uh, मतलब overreacted. ओके, एक स्टूडेंट है आरिफ, उन्होंने हैंड रेज किया है। काइंडली आरिफ आप अपना क्वेश्चन पूछ लें सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर टिश्यू कल्चर के बारे में क्वेश्चन था, क्या ये हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इसके रिजल्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं? सॉरी आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सॉरी, अब ठीक है सर आवाज? जी जी सर टिश्यू कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हम जी बोले। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये हम इसके रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं? जी ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, क्योंकि अब सब लोग ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स की तरफ ही जा रहे हैं, डेटाबेस को एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ से मतलब अपने डिजायर्ड जीन्स को देखते हैं और क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स इसके जरिए बना सकते हैं और फ्रोस्ट रेजिस्टेंट और जो होते हैं थर्मोस्टेबल वैरायटीज की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने अब अपनी रिसर्च की है शुगर केन पे, तो मैंने रेड रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई है। तो अब मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जरिए रेड रॉट रेजिस्टेंट जीन्स के प्राइमर डिजाइन करूंगा और उनका फिर स्क्रीनिंग करूंगा। तो ये बहुत इसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की ना। Bioinformatics is the golden biotechnology. It is used in every field of biotechnology, every branch. ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। व्हाट द मोस्ट एक्सट्रीम दैट द क्रोमोसोमल वेरिएशन कैन कॉज So I चेंज think the फ्रॉम question is पेरेंट clear. ऑर्गेनिज्म? यस, क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट एक्सट्रीम दैट क्रोमोसोमल वेरिएशन कैन कॉज चेंज फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म? Can you repeat the question? What are the most extreme that the chromosomal variation can cause change from the parent organism? Basically, there are no changes in the chromosomes. These are just the changes in the callus. So once the callus gets changed, there are genetic variations. There are no changes in the chromosomes. Chromosome remain the same, but the genes get upregulated. The genetic makeup of those plants, it is improved using this technology. The plants are grown in a sterile environment, so if there is any bacteria or bacterial genome inside the mother plant or the X plant or the wild type, there is no uh, risk of those genes in the tissue culture plants, because you have maintained the aseptic conditions. So I think the question is clear. यस सर। सर मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो टिश्यू कल्चर के लिए बेसमेंट क्यों बनवाते हैं? इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है? नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि ये बेसमेंट पे ही हो, ये कहीं पे भी किया जा सकता है, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि ये मतलब बेसमेंट में हो। जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो तो बेसमेंट में नहीं है, वो तो फर्स्ट फ्लोर पे है। जी सर, यही क्वेश्चन है कि बेसमेंट में क्यों प्रेफर किया जाता है? बेसमेंट में इसलिए किया जाता है कि वह थोड़ा सा ना टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन करना इजी होता है, क्योंकि हमने मैक्सिमम
14 डिग्री या इससे कम रखना होता है टेम्परेचर ना, जब आर्टिफिशियल कंडीशन में रखना होता है। तो हमने मतलब जिस तरह हर जगह का टेम्परेचर होता है, जब दिन को ज़्यादा गर्मी होती है, तो अगर आपकी लैब फर्स्ट फ्लोर पे है या ऊपर है तो वहाँ पे टेम्परेचर शॉक लगने का ख़तरा ज़्यादा होगा। तो बेसमेंट में तो धूप नहीं आती ना, इस वजह से वो बेसमेंट को प्रेफर किया जाता है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकते हैं या फिर मैसेज के इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। यू हैव ओनली 2 मिनट्स, फिर हमने वेबिनार को वाइंड अप भी करना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन है जी करें। सर, कहीं आप ये बता दें कि जैसे हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है टिश्यू कल्चर में दैट वी आर फेसिंग कंटामिनेशन। अब एक प्रोसीजर आपने उसको कर लिया है, उसके बाद एंड में आपको जाके पता चलता है कि किसी स्टेप में कंटामिनेशन हो गई, तो काफी लेबोरियस हो जाएगा अगर हम दोबारा से उस चीज को स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम पे कोई ट्रबल शूटिंग हो सकती है या फिर कोई मेंटेनेंस हो सकती है कि हम पूरा प्रोटोकॉल दोबारा स्टार्ट ना करें और हमारी जो हाइजीन है वो भी मेंटेन हो जाए। A very good question. Yes, these problems are faced in the lab. So once the plant is well grown and the shoots are multiplied, and you were happy with the progress of the plants, but unfortunately, suddenly the contamination appears, then you go to the hardening stage. You immediately wash the plant with fungicide, treat the plant with fungicide solution, and then you go for the hardening stage and give the IBA, indole butyric acid, that enhance the rooting of that plant. And you have to make a media containing soil and cocopeat. Add the plant in the cocopeat and add some indole butyric acid. So the plant is now in a good condition. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन टिश्यू कल्चर can be used to test the conditions a plant can handle? यानी कि उसका एक्सट्रीम, उसका सर्वाइवल रेट चेक करने के लिए हम पहले टिश्यू कल्चर को यूज कर सकते हैं। Yes, it can be used to check whether the plant is able to survive in the specific environment. So you can use, yeah, you can use it. ओके सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है देन यू हैव लास्ट मिनट, आप पूछ सकते हैं मैसेज में भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी टेस्ट द सिम्बियोटिक रिलेशन टू? Actually, I have no idea about it, whether we can check the symbiotic relation in tissue culture technique or not. So I'm not aware of it. ओके, होप सो आप सबकी क्यूरीज सॉल्व हो गई होंगी और अटेंडेंस फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय गिविंग आर्टिफिशियल टेम्परेचर कैन वी कल्चर ऑल प्लांट्स? Yeah, I have previously answered the same question, that once the growth conditions are optimized, you have to check. Like right now, I'm working on many other plants. Like I'm working on a teak plant. Teak plant is commonly named as sagwan. इसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है सागवान की ना, टीक प्लांट। तो इसको अब मैं लैब में ग्रो कर रहा हूँ और मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि किसी तरीके से ये हमारी लैब के इन्वायरमेंट में
ग्रो कर जाए. तो आई एम टेस्टिंग इट. So you can once the conditions and media are optimized, then any plant can be grown. But it takes time. It takes protocols to develop. It takes a lot of time. Yeah. Okay, sir. Jazakallah. If there is any question, किसी का कोई question है? Have you ever tested plant roots, like their ability to take up water and nutrients? Yes, I recently cultured date palm. अजवा खजूर का मैंने लगाया कल्चर, और उसको मैंने उसकी रूट्स डेवलप हुई हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर उन्होंने जाके अब वो ग्रो कर रहे हैं. तो यस, इट इज़ possible and I have checked it. Okay, okay. Thank you so much, sir. Jazakallah khair. तो one last time, कोई question है तो आप बता दीजिए. Anyone else? Can you tell about hydroponics? हिना, फातिमा, पहले आप इसका आंसर कीजिए. Can you tell us about hydroponics and then हिना फातिमा आपसे पूछेंगी इसके लिहाज से क्वेश्चन. Is quite different from tissue culture. इसमें तो हम मतलब ग्रोथ मीडिया बनाते हैं, उसमें एमएस सॉल्ट डालते हैं, शुगर डालते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स डालते हैं. लेकिन हाइड्रोपोनिक इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस टेक्निक, सो इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर. वी कैन अरेंज एनी अदर टॉक ऑन इट. ओके, ठीक है. हिना फातिमा, काइंडली आप अपना क्वेश्चन पूछ लें सर से. हिना फातिमा, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है. ओके सर, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया. और आई नो थोड़ा बहुत इश्यूज थे मीटिंग्स के लिहाज से भी और टाइमिंग के लिहाज से, लेकिन इसको हमने कवर अप किया बेहतरीन तरीके से. जज़ाकल्लाह खैर अगेन. तो आई थिंक सो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. हिना फातिमा का स्टिल हैंड रेज है, लेकिन वो माइक पे नहीं क्वेश्चन कर रही, ना मैसेज पे कर रही हैं. तो आई थिंक सो, थैंक यू सो मच. आपसे एक फाइनल अल्लाह हाफिज हम सब कहेंगे, और जज़ाकल्लाह खैर. Okay, Allah Hafiz, and keep it up. Very good for the emerging scientists. ओके सर, थैंक यू सो मच. आप सब लोगों को 2-3 दफ़ा अटेंडेंस फॉर्म मैंने भेज दिया था. वॉइस इशू आ रहा है हिना फातिमा का, तो आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए. ओके, तो आप लोग उसको फिल कर दीजिएगा, और आज का वेबिनार एंड होता है. तो जज़ाकल्लाह खैर. हबीबा, काइंडली आप